does not miss a door, it does not miss a house. Some people keep on doing things and उनके साथ कुछ नहीं होता, they just continue doing it. Nothing, I cannot see any results of कर्म. अगर हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है तो इसमें आता है सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म, विकर्म. Now to understand, I think that अकर्म means that no action at all. बट एक्चुअली अगर आप भगवत गीता में देखें तो इसको एक डिफरेंट तरीके से समझाया गया है. इट्स नॉट इन एक्शन बट इट इज एक्शन इन एन एक्शन, बट दे आर डन थ्रू 3 डिफरेंट वेज. कौन से 3 डिफरेंट? अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो भी वो इट गेट्स कैलकुलेटेड एज योर एक्शन. यथा कर्म तथा श्रुतम. मतलब whatever you shall do, whatever your actions are, so shall your destiny be. Now this is a beautiful sentence used in बृहदारण्यक उपनिषद. कर्म मेरे साथ अच्छा हुआ है क्योंकि मैंने अच्छा किया, और आई हैव डन गुड, और दैट पर्सन इज डन हॉरिबल एंड हेंस something horrible is happening to him. This is such a commonly used statement in today's world, and which is true also. ऐसा नहीं है, but it is incomplete. Karma and karma ka concept is extremely detailed. Thousands and thousands of volumes have been written for this, and still it is ununderstood. But let us basically understand in today's video what karma is, what are karma phalas, that means the fruits of the action, and what are the classifications of karma, and what is the classification of karma phala. Just simple understanding for our everyday knowledge that we can integrate that in our daily lives. Now when we talk about कर्म, तो कर्म अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं. बट टू अंडरस्टैंड अच्छा या बुरा कर्म और एनी काइंड ऑफ कर्म, व्हाट इज कर्म, or as we loosely call it in western world is karma. Now any action that you do, का मीनिंग ही वो है एक्शन. जो आप कोई भी एक्शन करते हो वो है आपका कर्म. अब जो भी एक्शन आप करोगे उसका एक इक्वल या करेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिएक्शन होगा. नाउ दैट विल बी योर कर्म फल. सो आपने एक चीज़ की, उसके ऑपोजिट में एक चीज़ मिली. नाउ दैट इज योर कर्म एंड योर कर्म फल. Every individual, every soul on this planet has to go through this cycle of karma and karma phala. Whatever you do will come back to you. And that is why हमारे इंडियन फिलोसफी में क्या है, कभी ये नहीं बोलते हैं that it is linear. हम साइक्लिक बोलते हैं. जो किया है वैसा पाएगा. जो whatever you sow, so shall you reap. And because it is a cyclic way of understanding. This is the Hindu or the Indian philosophy, and I think every philosophy in the world talks about karma. What you do, you will reap. Now to understand what are the different types of karma, अगर हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें आता है सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म, विकर्म. Now to understand what these are, सकाम कर्म क्या होता है? जो खुद के लिए, खुद के लिए सेल्फिश मोटिव्स या फिर सेल्फ सेंटर्ड एस्पेक्ट के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो वो सकाम कर्म होता है. निष्काम कर्म होता है विच इज़ डन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू गॉड. हम इट इज़ नॉन सेल्फिश, इट इज़ सेल्फलेस actions that you do. Then comes a karma, which again means, lot of people think that a karma means that no action at all. But actually अगर आप भगवत गीता में देखें तो इसको एक डिफरेंट तरीके से समझाया गया है. इट्स नॉट इन एक्शन बट इट इज़ एक्शन इन एन एक्शन. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ कर्म है. नाउ द लास्ट कम्स एज विकर्म. विकर्म मीन्स सिंफुल और evil or purposely done action to harm somebody else. Now all of these karma कैसे किए जाएंगे? Because there has to be a way to do all of these things, right? So how do you actually do these things? Now these all karmas everybody does, but they are done through 3 different ways. कौन से 3 different ways है? Mental, verbal and physical. Now कुछ कर्म होते हैं जो फिजिकली हम करते हैं. किसी को मारा, किसी को you throw something at somebody, you kill somebody. Please don't do that. But one of those actions. Then there is verbal. You verbally abuse somebody. You say something to somebody. That is your verbal karma. आपने बोला और it's going to come back to you. Then comes mental.
Now, a lot of the people in today's world डिस्काउंट दिस थिंग, और ये डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि mental intentions and mental karmas are very very strong, because those are actually only on a very subtle vibrational level, but they are also karma. अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो भी वो it gets calculated as your action. Even if it is in the thought, it does not need to be in the physical form. Even if you've thought about it, it still counts as an action. So mental है, physical है, and emotional या फिर verbal है. All of these karmas are counted. कर्म अच्छे बुरे दोनों होते हैं. Everybody can distinguish how they are experiencing karma. Now कर्म फल क्या है? कर्म फल भी 3 टाइप के हैं, या फिर कर्म जिसको हम बहुत पॉपुलरली उसको 3 क्लासिफिकेशंस हम बोलते हैं. दैट इज संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म. नाउ संचित कर्म क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. संचित मतलब स्टोर्ड. सो वॉट एवर यू हैव स्टोर्ड एंड केप्ट फॉर मल्टीपल लाइफ टाइम्स. हिंदुइज्म या फिर इंडियन फिलोसफी वी टॉक अबाउट मल्टीपल लाइफ्स एंड डेथ्स एंड साइकिल्स ऑफ लाइफ, राइट? सो संचित कर्म आर दोज कर्म दैट are stored in the storehouse of your spiritual. They can be thought, emotions, physical, whatever. All those are stored there and kept. Over time, जैसे आपको उसको फेडना हो या फिर you to release those debts, they come in play and you have to let go of them. Then comes prarabdha karam. Now prarabdha karam means what you're experiencing in this lifetime. Now think about it as Netflix. So अगर Netflix you're watching something, you've already watched 2 episodes, but when you're watching the next couple of episodes of your life, that plot is already ready, that script is already ready. That depends upon those previous karma that you're going to experience in this lifetime. So that is your prarabdha karma. That is ready for reaping, harvesting in this lifetime. Agami karma are the ones that you are creating right now. So you have to be extremely careful of what you are creating at the given moment. So those are going to be agami karma. जो आप अभी create कर रहे हो, जो आपके अंदर या फिर आपके बोलने से या एक्शन से जो आप अभी अपने लाइफ में संस्कार ला रहे हो, those are important and those are agami karma. Now some people also say that हमारे साथ एक्सपीरियंस बहुत जल्दी होता है. इफ़ आई डू समथिंग हॉरेबल, समथिंग क्विकली कम्स बैक टू मी. एंड ऑल्सो दे से दैट सम पीपल कीप ऑन डूइंग थिंग्स, उनके साथ कुछ नहीं होता, दे जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट, नथिंग, आई कैन नॉट सी एनी रिजल्ट ऑन इट. Now for those people I want to say karma does not miss a door, it does not miss a house. एक बार भगवान माफ़ करता है, कर्म माफ़ नहीं करते. So don't think like that. होता ऐसा है when you are spiritually growing, okay, so if you are progressed in a particular level, think about it like a drainage pipe. अगर आपने regularly वो drainage pipe clean करते रहे हो, आप सिंक का drainage pipe, तो अगर आप कुछ कचरा डालते हो तो थोड़ा ब्लॉक होता है but immediately निकलने लगता है. So spiritually progressed people have a clearer drainage pipe. Now when they do something, it immediately showcases and immediately runs through that process and you see the result very quickly. But people who have strong debris of karma or very very heavy or dark karma for multiple lifetimes, आप अभी के कर्म डालोगे वो दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले के क्लियर होते होते it's going to take time. They have a blocked drainage system, and what they're experiencing now can be of a far previous experience than you can actually know or understand. And that is why some people experience faster results of karma, some people experience or don't experience that quickly if they've done something good or bad immediately. Depends on how clean your pipe is. So if you are experiencing quickly, then you're lucky and you should continue practicing good karma. When I say good karma, also don't think about your karma as मैंने कुछ अच्छा कर दिया तो मेरे साथ अच्छा होगा. The minute you think that, the punya of that is gone too.
So be very careful. This is a tricky situation. इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो बट उसके साथ अटैच ना रहो. So that is why you have to give, you have to always have a karma. That means whatever you do, your action should be based in action. Whatever you do is at the feet of the divine. So I hope you've understood the basics of karma, and you will be very careful of your karma and understand your karma phala. Namaskar.